Here exercise 1.1, sum number 1. What is asking? The sample space for the following random experiment, okay? So A balance coin toss 3 times. Okay? So here a balance coin toss 3 times. Now question first A. Okay. A balance coin is thrown for 3 times. Okay. Now see here, in this case you have to find sample space. Okay. So here uh, a balance coin, okay, is tossed for 3 times. So your base is 2 and 2 raised to 3, that is 8. Okay. So your answer is 8. Okay. Now write down point number 1. Okay. When 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 coin is tossed for 3 times, when coin is tossed for the first 3 times, the possible ways equals to h. The possible ways equals to first time we get head, second time we get head, and third time we get head is equal to h. ओके बराबर है. तो इस तरह से इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं. ओके बराबर है. अदरवाइज second time when coin is tossed for second time, the first we get head, second we get head, and at third time we get tail. Okay, so possible ways is equal to h. Okay बराबर. इतना डीप में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो. ओके बिकॉज स्टेटमेंट कंपलसरी. ओके इसमें स्टेटमेंट कंपलसरी है. सो मैं डायरेक्टली अभी यू लिख रहा हूँ. ओके इतना लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है. ऐसा पूछा है तो आपको लिखना है, अदरवाइज नॉट. ओके सो फर्स्ट टाइम दैट इज अ हेड. नेक्स्ट टाइम हेड टेल. थर्ड टाइम हेड. फोर्थ टाइम टेल हेड. ओके उसके बाद फिफ्थ टाइम हेड टेल. उसके बाद टेल टेल. उसके बाद टेल हेड. उसके बाद टेल बराबर. तो इसको मैंने ये फर्स्ट और टू का मैंने आपको एग्जांपल लिखा है. इस तरह से आपको थोड़ा एक्सपांड करना है, स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद ये लिखना है. ओके बराबर. नाउ सेकंड वन, दैट इज द क्वेश्चन ए का सेकंड. ओके सो हियर वी मे आल्सो कॉल हियर बी. ओके बी तो भी चलेगा. A balanced dice with 6 sides and a balanced coin are tossed together. Okay लिखो इसमें when a balanced die tossed, then possible ways are
one, two, three, four, five, six. Okay, and a balance coin or toss. Possible ways, head and tail. Okay, इसके बाद if we toss both together, then total possible ways, head 1, head 2, head 3, head 4, head 5, head 6. उसके बाद tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5, tail 6. Okay, so it's depend on how much marks they ask. Okay, suppose 3 मार्क का है तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है. ओके, इसका भी स्टेटमेंट अलग होगा आपका, बराबर. सॉरी, H1 था. इसका भी अलग होगा स्टेटमेंट, इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा, वन बाय वन. ओके, अभी 1 मार्क का पूछा है तो आपको इस शॉर्ट में आप लिख सकते हो. ओके, बराबर है. 2 मार्क का पूछा है तो थोड़ा इसको एक्सपांड कर देना. ओके, स्टेटमेंट को. ओके, बट स्टेटमेंट इज कंपलसरी. ओके, डायरेक्टली आप आंसर दे दोगे, ऐसा लिख दोगे तो नहीं चलेगा. ओके, स्टेटमेंट इज कंपलसरी. नेक्स्ट वन नाउ. Two persons are to be selected from 5 persons A, B, C, D, E. Okay. Now here, 2 persons are selected. Okay. Question number 3. 2 persons are to be selected from 5 persons A, B, C, D, E. Okay. So इसमें भी आप पॉइंट लिख सकते हो. The first two person, if we select the possible ways, that is a A, B. Okay, बराबर है. तो आप इसमें लिख सकते हो इज इक्वल टू ए बी, बराबर. वैसे स्टेटमेंट आपको लिखना है. ओके, उसके बाद सेकंड क्या होगा, दैट इज अ ए सी. उसके बाद क्या होगा, दैट इज अ ए डी. ओके, इस तरह से आपको यू इज इक्वल टू लास्ट में लिखना है ए बी, देन ए सी, देन ए डी, देन ए ई. ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन बी सी, उसके बाद बी डी, उसके बाद बी ई. ओके, next one, that is a CD, then CE. Okay, then DE. बराबर. थोड़ा बहुत आपको स्टेटमेंट लिखना है, विदाउट स्टेटमेंट मत डायरेक्टली आंसर मत देना. ओके, so now next one, that is question number 2 now. Write the sample space of the marks in integers scored by students appearing in an examinations of 100 marks. State numbers of samples points in its. Okay, तो इसमें आपको लिखोगे पहले the sample space of the marks scored
by a student appearing in an examination, appearing for an examination, the total possible ways equals to 0 to 100. Okay, so therefore the number of samples point in it is 101. Okay, 101. Okay, यहाँ पे 0 भी काउंट होगा और 100 भी काउंट होगा. ओके, सो हियर कितने होंगे यूनिट्स? 101. नेक्स्ट वन नाउ, थर्ड वन. Write the sample space of randomly selected one ministers, one deputy ministers for 4 persons. Okay. If one minister and one deputy minister is selected from 4 persons equals to A, B, C, D. Okay. The possible outcomes of selecting 2 persons from 4 persons is AB, AC, AD. उसके बाद ए काउंट नहीं करेंगे. ओके, दो अलग अलग पर्सन चाहिए, तो ए काउंट नहीं होगा. तो उसके बाद होगा आपका दैट इज अ बी ए, 2 मिनट ए बी ए सी ए डी. उसके बाद होगा बी सी. आफ्टर दैट बी डी. उसके बाद सी डी. नाउ दैट इज अ बी ए. उसके बाद होगा आपका सी ए और सी बी. उसके बाद डी सी. ओके, like this you have to select the 4 person. Okay, next question now, quote 1. A balanced dice is thrown in the random experiment till the first head is obtained. The experiment is terminated with a trial of the first head. Write the sample space of this experiment and state whether it is finite or infinite. Okay. So आपको क्या करना है? टॉस करना है. ओके, क्या करना है आपको? पॉइंट टॉस करना है. हेड मिलेगा वैसे आपको स्टॉप हो जाना है. ओके, और ये आपको जैसे हेड मिला स्टॉप हो गया फर्स्ट टर्म में. ओके, सेकंड में एच सॉरी टेल हेड मिला स्टॉप हो गया. थर्ड में टेल टेल हेड मिला स्टॉप हो गए. फोर्थ में टेल 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 हेड मिला स्टॉप हो गए. फिफ्थ में टेल 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 हेड मिला स्टॉप हो गए. लाइक दैट. ओके, बराबर है. तो इस तरह से आपको इसमें करना है. ओके, नेक्स्ट वन. जैसे आपको हेड मिलता है आपको एक्सपेरिमेंट टर्मिनेट कर देना है. ओके, बराबर, उसको वाइंड अप कर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर
balanced dice from experiment. Question number 4. Question number is 4. So now question number 4 here. A balanced dice is thrown at a random experiment until the first head is obtained. Okay. So यहाँ पे लिखेंगे a बैलेंस कॉइन होगा, ये बैलेंस कॉइन क्योंकि डाई में हेड नहीं होता है, ओके कॉइन में होता है। बैलेंस कॉइन इज थ्रोन इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट till the first head is obtained. The experiment is terminated. The experiment is terminated. So first one, when coin is tossed and head occurs. So stop हो जाओ, okay? बराबर. Second time, when coin is tossed for two times, first time tail occurs and second time head occurs. So is equal to tail head, okay? थर्ड टाइम आपको ये पूरा लिखना है, उसके बाद टेल टेल हेड स्टॉप हो जाओ, ओके? फोर्थ टाइम पूरा लिखना है आपको स्टेटमेंट, टेल 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 एच मिला स्टॉप हो जाओ। फिफ्थ टाइम आपको पूरा लिखना है, ओके? टेल 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 हेड मिला स्टॉप हो जाओ, बराबर है? तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इन्फिनिट, ओके बराबर है? सो यहाँ पे आपको लिखना है द एक्सपेरिमेंट इज infinite and it is endless, okay? And it is endless, okay? तो ये खत्म होने वाला नहीं, ओके बराबर है? जैसे हेड मिला आपको स्टॉप हो जाना है, बराबर? सो क्वेश्चन नंबर 4 इज फिनिश, ओके? सो यहाँ तक जो भी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन क्या थे, दैट इज यहाँ पे लॉजिक थोड़ा कम था, ओके? बट क्वेश्चन है तो आपको आंसर देना होगा। बट नाउ onwards the all questions are logically okay. So now question number 5 now. Write the sample space of the experiment of randomly selecting the three numbers from the first five natural numbers. Okay, three numbers आपको select करने हैं for the first five natural numbers. Okay, so write down here the sample space for the experiment of randomly selecting three numbers from first
5 natural numbers. Okay, first 5 natural numbers. यहाँ पे आपके पास नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? दैट इज अ 1 2 3 4 5. आपको सिलेक्टिंग करना है, यानी क्या होगा आपका 5C3 होगा. सो 5 इंटू 4 इंटू 3 और 3 इंटू 2 इंटू 1. तो 3 कैंसिल. सो आपके पास कितने ऑप्शंस होंगे? 10 ऑप्शंस होंगे. ओके, नाउ सो हियर फर्स्ट नंबर आपको सिलेक्ट करना है. सैंपल स्पेस u इज इक्वल टू सैंपल स्पेस u इज इक्वल टू फर्स्ट क्या होगा आपका 1 2 3. ओके, इसके बाद होगा आपका 1 2 4. इसके बाद आपका होगा 1 2 5. ओके, नेक्स्ट वन इज 1 3 4. इसके बाद होगा आपका 1 3 5. और नेक्स्ट वन अभी 1 को ड्रॉप करो. 2 3 4. इसके बाद 2 4 5. ओके, इसके बाद 3 4 5. ओके, उसके बाद आपका 2 3 4 था. उसके बाद 2 3 5 हो गया बराबर. उसके बाद 2 4 5 रह गया अपना. सो 2 4 5. सो 10 हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और एक रह गया, दैट इज अ 2 3 5. ओके, so these are 10 samples, okay, of question number 5. Next one now. So I'm taking attendance first of all. Attendance आपको ले लेता हूँ मैं. Oh, 30 boys and girls. Very good. मैं आपका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ. So here Ayushi, Anuj, Earth, Ayush, Garg, Harshil, Himani, Ishika, Jaimin Patel, Jia, Kashish, Khushi Sharma, Komal, Khushu, Manusri, Manvinder, Vishwa, Rishi, um, Murgesh, then Preksha, Prem, Priya, Sanvi, Tisha, Vinit, Vishu, Yash, and Om. Okay. So now, question number 6 now. The sample space of a random experiment of selecting numbers u 1 to 20. Write the set showing the following events. The selected number is an odd number. Okay. So question number 6 now. So question number 6, the sample space of random experiment of selecting u is equal to 1 to 20. The sample space of the random experiment of selecting a number u is equal to 1 2 3 up to 20. Okay. First one क्या होगा? The selected number is odd number. Okay. The selected number is odd number
So the sample space of selecting an odd number from 1 to 20, u is equal to 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Okay. Now second, the selected number is divisible by 3. The selected number is divisible by 3. ओके अभी पूरा सैंपल स्पेस थियरी पूरा डिपेंडली लिख रहा हूँ ओके और डायरेक्टली मैं आपको आंसर दे रहा हूँ ओके सो हियर u is equal to 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 ओके तो इतने नंबर आएंगे उसमें ओके बट आपको पूरा यहाँ पे लिखना है थियरी लिखना है ओके मैं थियरी लिख रहा हूँ डायरेक्टली अभी आंसर लिखना है ओके सो नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 the selected number is divisible by 2 or 3 okay the selected number is divisible by 2 और 3 ओके देखो आपके पास नंबर कौन से हैं 1 to 20 ओके कितने हैं 1 to 20 है सो पहले लेंगे 2 ओके 2 और 3 से ओके सो u इज इक्वल टू देखो 1 डिवाइड नहीं होगा 2 डिवाइड होगा 3 भी डिवाइड होगा बिकॉज 3 वन जा 3 2 टू जा 4 4 भी होगा ओके देन 5 नहीं होगा ओके 6 होगा क्योंकि 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 ओके 7 नहीं होगा 8 is also there okay because 2 4 are 8 9 होगा 3 3 are 9 2 5 are 10 भी होगा 11 नहीं होगा 2 6 are 12 होगा 13 नहीं होगा 14 होगा 2 7 are 14 3 5 are 15 15 भी होगा 16 भी होगा 17 नहीं होगा 18 then 19 is not there then 20 okay so these are the numbers are divisible by 2 or 3 okay आपको स्टेटमेंट लिखना है उसके बाद ही आंसर लिखना है डायरेक्टली मत लिखना ओके नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7 one family selected from the families having two children okay the sex male or female of the children from this family is noted state the sample space of this experiment and write the sets showing the following events event a a1 one child is female event a2 at least one child is female okay so यहाँ पे आपको लिखना है पहले स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 7 question number 7 now one family is selected one family is selected from the families from the families having two child two children okay the conditions are as follows number 1 event a1 is equal to one child is a female okay if we selected one child is female then
first child is female and second child is male, then possible outcomes are, that is a FM. Okay, that is a FM. Okay, तो यहाँ पे मेल फीमेल दिया है, बट चाइल्ड की बात करते हैं तो क्या होता है बेटा, गर्ल बॉय होता है। ओके, तो गर्ल बॉय लिखना बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड भी बोला है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेल फीमेल बोला है, तो चाइल्ड थोड़ी मेल फीमेल होता है। ओके, चाइल्ड तो क्या होता है, गर्ल बॉय होता है, तो लिखेंगे गर्ल और बॉय। ओके, बराबर। और आप उसके बाद आपके सबको स्टेटमेंट लिखना है, और स्टेटमेंट मिलने के बाद आपको दूसरा आंसर क्या मिलने वाला है, एंड दैट इज सेकंड आंसर इज आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद आपको मिलेगा क्या, लास्ट में क्या मिलेगा आपको, दैट इज अ बॉय गर्ल। ओके, तो आपका यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर यू इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या आपको मिला था, दैट इज अ गर्ल बॉय, और दूसरा मिलेगा बॉय गर्ल। ओके, सेकंड में आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद आपको ये लिखना है, उसके बाद यहाँ पे अब यू लिखना है। नाउ सेकंड क्या दिया हुआ है, इवेंट A2 के, A2 में क्या लिखा हुआ है, दैट इज अ एटलीस्ट, एटलीस्ट वन चाइल्ड is a female. Okay, at least one child is a female। तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, बराबर। फर्स्ट लास्ट में आपका क्या होगा आंसर, दैट इज अ गर्ल बॉय। ओके, उसके बाद स्टेटमेंट क्या होगा आपका, बॉय गर्ल। सेकंड में, थर्ड में पूरा आपको स्टेटमेंट लिखना है और गर्ल गर्ल लिखना है। ओके, बराबर है। फिर उसके बाद में देयरफॉर यू इज इक्वल टू गर्ल बॉय, देन बॉय गर्ल, देन गर्ल गर्ल। ओके, एटलीस्ट वन गर्ल का बोला है, इसका मतलब क्या हुआ, एक और एक से ज्यादा, एक तो होनी ही चाहिए। एट द मोस्ट वन होता तो क्या होता, जीरो और वन होता, बराबर है। बट यहाँ पे एटलीस्ट वन बोला है, सो गर्ल बॉय, बॉय गर्ल और गर्ल गर्ल, बराबर। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या दिया हुआ है, टू सिक्स फेस बैलेंस डाइस आर टॉस simultaneously, state the sample space of this experiment and hence write the set showing the following events। यहाँ पे टू सिक्स बेस डाइस टॉस किया। ओके, इवेंट ए वन, द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 7। ओके, द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 7। ओके, तो यहाँ पे आपका 7 चाहिए। ओके, तो उसको नए पेज से करेंगे ताकि प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। सो हियर क्वेश्चन नंबर 8। सो यहाँ पे क्या दिया है, टू सिक्स पेज बैलेंस डाइज आर क्रॉस simultaneously, state the sample space of the experiment and hence write the set showing the following events। ओके, तो पहले आप यू लिखोगे, if two dice are tossed, if two dice are tossed simultaneously, then possible events are as follows। So u is equal to, आपको पूरा लिखना होगा बेटा, that is a 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
16। इसका शॉर्टकट भी है, तो आपको मैं शॉर्टकट भी सिखाऊंगा कि शॉर्टकट कैसे डायरेक्टली फाइंड करना है। ओके, दैट इज अ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2